सभी को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से और बात करेंगे आज आप लोगों के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। और टीवीएस मोटर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और सुजलॉन विंस फर्स्ट एक्सेलरमेटल विन ऑर्डर टॉप बाजिंग स्टॉक टुडे। और Indian benchmark indices trade volatile throughout the session and ultimately closed green. And Indian equity benchmark indices Sensex and Nifty50 managed to eke out gains on Wednesday despite volatile moves through the day. Investors were reacting to Q3 financial year 2026 result along with the finalisation of the India-European Union Free Trade Agreement. At the closing bell on Wednesday, the BSE Sensex closed higher by 487 points, up 0.6%. Meanwhile, the NSE Nifty closed 167 points higher, up 0.6%. Bharat Elec Eternal Bajaj Finance among the top gainer today. Asian Paints, Maruti Suzuki, Pharma on the hand were among the top losers today. And for impact of the Bank Nifty, companies and the comprehensive overview of the index check out Equitymaster and Bank Nifty companies list. The BSE Midcap Index indexed 1.5% lower and BSE Small Cap Index indexed 2.2% lower. Subject to market risks, read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, और आप लोगों ने देखा TVS मोटर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट के बारे में। और शेयर ऑफ TVS मोटर केम इनटू फोकस आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड इट इज द Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 result. The company's share price rose after it reported a 51.2% year-on-year increase in profit after tax paid to reach 9.40 billion in the Q3 financial year 2026, up from reach 6.18 billion Q3 financial year 2025.